Assalamualaikum. Our project is a heuristic evaluation of eternal domination strategies. The team members are myself, Ikhlas Ahmed, Omar Kashif, and Mohammed Waji. Let's dive into it. तो हम लोग ये चीजें कवर करेंगे इस प्रेजेंटेशन में. तो फर्स्टली विल इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, eternal domination problem. हम लोग motivation बताएंगे कि why we picked this problem, the project objectives that we seek to achieve. We'll explain the paper. We'll explain our building blocks, and we will show our algorithms and the results that we found. So first of all, eternal domination क्या है? So we can imagine it like a game. Basically उसके अंदर our board is a graph. ठीक है. और उस ग्राफ के अंदर जो है ना हमारे अटैकर होता है और डिफेंडर होता है. तो डिफेंडर क्या करता है पहले कि ही एड्स guards to the graph such that कि आपका every node either has a guard in it or has a guard adjacent to it, which one node one edge distance पे. ठीक है. And then the actual game begins. फिर अटैकर जो है ना picks out a node that has no guard in it एंड बेसिकली उसको अटैक करता है. फिर आपका डिफेंडर जो होता है ही हैज टू मूव अ गार्ड इनटू दैट अटैक नोड टू डिफेंड इट. ठीक है. And if there is no guard in like one edge distance to the attack node, the attacker wins. वरना the game repeats until x number of times repeat होती है until either x number of turns आपके हो गए उसमें जिससे वो attack and defense attack and defense attack and defense until either आपका defense successful हो जाता है eternal, which is called eternal domination, or your eternal domination breaks, which means your attacker successfully attacks a node that cannot be guarded. So our motivation for this stems from the real world applications of this. तो जैसे ये जो प्रॉब्लम है ना, it can be used in cyber security and network defense. तो जो आपके जैसे कंप्यूटर्स हैं, they are your for example node server वगैरह जो आपके nodes हो गए, and then for example कोई अटैक करता है तो you could how you would counter that, where should the guards be वगैरह. Same disease monitoring and containment. तो अगर कहीं पे disease outbreak हो रही है तो how do you contain that, making sure कि effectively आपके guards हों. फिर games में भी use हो सकते हैं AI में. So our project objectives आर के हम लोग अटैक की स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करेंगे, डिफेंडर्स की स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करेंगे, एंड हम डायरेक्टेड ग्राफ्स में जाएंगे. सो वी विल एक्सप्लोर लाइक न्यू स्ट्रेटजीज जो कि पेपर में एक्सप्लोर नहीं हुई, वी विल कवर दैट अभी. एंड जो डिफेंडर्स एंड डायरेक्टेड हम लोग एक्सप्लोर करें, दे हैव नॉट बीन कवर्ड एट ऑल. सो द पेपर एक्सप्लेनेशन. So the paper basically asks this question: can brute force efficiently solve attacker strategies for any graph in eternal domination? तो इसमें बेसिकली ये था कि दे फाउंड आउट के पॉलिनोमियल टाइम में आप सिर्फ जो है ट्रीज को कर सकते हो और आप जो है को-ग्राफ्स को कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डू इट ऑन अ जनरलाइज्ड ग्राफ. इट कैन नॉट बी डन ऑन एवरी ग्राफ इन पॉलिनोमियल टाइम. ब्रूट फोर्स नहीं हो सकता. तो बेसिकली इसकी इम्प्लीकेशन यही है कि जब वो कॉम्प्लेक्सिटी का बैरियर है फॉर ब्रूट फोर्स, एंड वो सिर्फ जो है ट्रीज वगैरह के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं सोल्यूशन. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दीज थिंग्स. Basically, we'll find alternate solutions to brute force for general graphs. So our building blocks are those random graphs, which basically allows us to generate a graph based on a probability, or a probability जो आपकी define करती है कि how probable is an edge to exist between two nodes. This gives us more control over कि किस तरह graph generate हो रहा है, right? And then building the dominating set. ठीक है, उसका algorithm है हमारा. Attack strategy के algorithms हैं and defense strategies के algorithms हैं. These are our building blocks. So defense strategies, Umar will take over from here. फॉर श्योर. तो हमारे पास जो तीन डिफेंस की स्ट्रेटजीज हैं. सबसे पहले आगे हमारे पास डिफेंस ग्रीडी एडजेसेंट. व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट व्हेन अ नोड गेट्स अटैक्ड वी इमीडिएटली चेक इट्स नेबर्स टू सी इफ एनी गार्ड्स आर डायरेक्टली एडजेसेंट. सिंस तो इसमें हो ये रहा है कि हमारी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है कि हम सबसे वी आर पिकिंग द फर्स्ट एडजेसेंट गार्ड एंड वी आर फाइंडिंग एंड सेंडिंग देम टू डिफेंड. सो इट्स लाइक फर्स्ट सर्व टैक्टिक. एंड या दैट्स प्रीटी मच व्हाट्स हैपनिंग हियर. तो अब रैंडम एडजेसेंट में ये हो रहा है कि दिस बिल्ड्स ऑन द ग्रीडी एडजेसेंट आइडिया बट इट एड्स अ ट्विस्ट. सो इंस्टेड ऑफ ऑलवेज पिकिंग द फर्स्ट एडजेसेंट गार्ड वी फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल द नोड्स दैट आर एडजेसेंट टू दिस and which have guards, and then we randomly select one from that is to defend. And this introduces an element of unpredictability कि आपको पता नहीं होता कि भाई कौन सा कार्ड जो डरा के डिफेंड करेगा. तो ये चीज जो है ना वो फिर अटैकर जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कौन सा जो है वो डिफेंड करेगा. तो अब हम आगे आ जाते हैं क्लोजेस्ट गार्ड डिफेंस पे. तो क्लोजेस्ट गार्ड में भी ये चीज उससे बिल्डअप हो रही है. इधर ये हो रहा है कि हम we are looking at the nodes which are adjacent to the attack node, and we are also looking to the nodes which are adjacent to that node which is adjacent to the attack node. तो हम basically इसमें एक टू लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आ रही है कि जो नोड अटैक हो रही है उसके पास प्रोटेक्शन है, और जो बंदा गार्ड जो नोड गार्ड करने जा रही है उसके पास भी प्रोटेक्शन है कि अगर मुझ पर हमला हो गया तो मेरे पास भी जो है ना गार्ड होगा मुझे बचाने के लिए. तो अब हम अगले आ जाते हैं अटैक स्ट्रेटजीज पे आ जाते हैं. तो फार्देस्ट नोड की तरफ जब हम आए तो फार्देस्ट नोड में ये हो रहा है कि बेसिकली it is the attacker is attacking the node with the least amount of
adjacent guards. So basically, yes, we are looping through all the nodes, and we are skipping through all the nodes that already have a guard. And yeah, we're going to the node which has the least amount of adjacent guards. The random node, this is our second strategy. इसमें ये हो रहा है कि हम randomly जो है ना वो किसी भी unguarded node को attack कर रहे हैं. We are making a list of all the nodes that don't have a guard, and we are picking up one randomly. This is like a counter strategy to that random defense strategy. अब अगली वाली जो है वो होगी लीस्ट डिग्री नोड. तो लीस्ट डिग्री नोड का ये मतलब है कि वी आर बेसिकली अटैकिंग द नोड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ इन डिग्रीज, मतलब उसके लीस्ट अमाउंट ऑफ कनेक्शंस है. तो हम सीधा सीधा जाके उसको अटैक करें तो उससे होगा ये, अटैकर को फायदा ये होगा कि उसको पता होगा यार किसके कनेक्शंस कम है, तो लेस लाइकली गार्ड जाके जो ना उसको, मतलब उसको गार्ड्स को टाइम लगेगा उसको पहुंचने में. तो ये होगा, और वो इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड भी नहीं होगा इसी केस में. बिल्डअप कर देता है थोड़ा कि अगर उसके लीस्ट मतलब वो है डिग्रीज, सो दैट बेसिकली मेक्स इट सो दैट कि जब आपका एक दफा उसमें चला गया गार्ड, तो द गार्ड हैज एक्सेस टू लेस नोड्स दैट इट प्रीवियसली वुड हैव हैड. हम्म. तो Correct. इट्स अ स्मार्ट स्ट्रेटजी. तो आई गेस लेट्स लुक एट द रिजल्ट्स देन. तो इसके हमारे रिजल्ट्स इस तरह के आए हैं कि इटर्नल डोमिनेशन जो है अक्रॉस द बोर्ड ये सब स्ट्रेटजीज ब्रेक कर रही है फॉर अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस डिफरेंट स्ट्रेटजीज. सो हाउ यू वुड रीड दिस ग्राफ, इसके आपकी अटैक स्ट्रेटजीज जो है the bars represent के how many turns did it take before the attacker was successful, which means the attacker broke eternal domination. तो we can see के यहाँ पे जो है हमारा farthest mode attack strategy जो है वो random defense के against strongest थी and so on so forth. These are our results, and then we tried the same thing on directed graphs. ठीक है, तो उसमें हमारा फिर we can see the result was as expected कि आपके जो है ना वो it took way less turns through across the board for all attackers to have to successfully break eternal domination. Comparison में ये एक साथ देख सकते हैं हम लोग. So undirected on average मतलब at most it took us like less than 13 moves, and in directed at most it took us less than 6 moves. Right, and this was expected as well because आपका जो directed graph है उसका ना once a guard moves out of a node, he leaves that previous node completely undefended or मतलब really vulnerable, right? So each move the defender makes, it's leaving some nodes behind that are more and more vulnerable. So now we look at some new directed defense strategies that we came up with, which he will take over. अच्छा, तो जैसे क्लास में लगे बताया था कि जो है वो देयर वर आवर पेपर डिड नॉट टच ऑन द डायरेक्टेड ग्राफ्स और द डिफेंस स्ट्रेटजीज, so we thought that would be a great addition to our research as well. So we concluded 4 defense strategies and 4 attack strategies, new defense strategies and attack strategies for the directed graph. तो सबसे पहली थी इनबाउंड कवरेज. अच्छा, एज वी नो कि डायरेक्टेड ग्राफ में जो है वो द अटैक नोड कैन ओनली बी डिफेंडेड इफ अ गार्ड कैन रीच इट इन द फॉलोइंग करेक्ट डायरेक्शन. अगर तो एच है तो ही जो गार्ड जो है वो उसको डिफेंड कर सकता है. इनबाउंड कवरेज में वी असाइन अ गार्ड दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट इनबाउंड प्रोटेक्शन. अब ये किस तरह? वी कैलकुलेट अ स्कोर फॉर ईच गार्ड. स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है? वी एड द आउट डिग्री एंड इनटू द वन ओवर शॉर्टेस्ट पार्ट टू द अदर नोड. इस तरह जो है वो हम हर जो गार्ड की जो है वो स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अच्छा, सबसे पहले तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं, जैसे हर उसमें पहले भी बताया था क्लास ने कि देयर इज अ गार्ड दैट इज डायरेक्टली एडजेसेंट टू द अटैक नोड और उसके एज जा रहा है जो है वो ऑन दैट नोड, तो वी उस गार्ड को जो डायरेक्टली मूव कर देते हैं. अदरवाइज वी सेलेक्ट द गार्ड विद द हाईएस्ट स्कोर एंड देन मूव इट टू द अटैक नोड. द सेकंड स्ट्रेटजी जो हमारी थी, इट वाज द एक क्लास सेकंड वाज ना, Yes, sorry. it was the shortest path centrality. इसमें क्या होता है? The nodes with the highest betweenness centrality, which means that the nodes that are lying on many shortest paths, they are critical. We want guards who are the most important in that network to defend the attacks. So how that this works? We calculate the centrality for all the nodes that often appear on shortest paths, and then we rank the guards based on their centrality. जिनकी highest centrality होती है उनको हम सबसे पहले rank करते हैं. So if a top rank guard is adjacent to the attack node, we move it to defend. If there are no adjacent guards, if no adjacent guard exists, we move the guard with the lowest centrality to defend the attack node. So the third one is the backtracking sentinel. In this, we focus on the important nodes based on the in degrees, the nodes that receive many connections. So we place guards at these high in degree nodes, and they are prioritized to defend the attacks. So ये इस तरह काम करता है कि we identify the sentinel nodes or which are the nodes that have the highest in degree than the average. So in this, we only consider non-sentinel. So only the non-sentinel nodes, or sorry, the guards that are not in high in degree nodes for movement. If any movable guard is adjacent to the attack node, we move it to the defend. Otherwise, we randomly pick a movable guard to defend. Third is the predictive reachability. In this, we predict the nodes which can reach the attack node and move closest to the reachable guard to defend. अब ये कैसे डिफाइन करता है? स्टेप 1 is कि we pre-compute the reachable sets for all the nodes, and then for each guard we compute the shortest path length to the attack node. उसके बाद हम वो guard को choose करते हैं that has a minimum number of hops. If the best guard can reach the attack nodes even in multiple hops, तो हम उसको move कर देते हैं to defend.
Then for the last for the new dead end for the dead end for the attack, sorry, the attack strategies, we have the dead end exploit. In this, we target the nodes that are in the dead zones. What that means is that the nodes that are that have zero outgoing edges, because once you reach them, there are no guards that can chase back through them. So इसमें हम क्या करते हैं? We identify the sync nodes or the nodes that have the out degree equals to 0, and that are not guarded yet. So from these sync nodes, we find the ones that are unreachable by any guard. If an unreachable sync exists, we randomly attack one. If not, randomly attack any sync nodes. So the next attack strategy is the reverse flow. In this, we target nodes that are less connected in terms of the in degrees, or we find the nodes with low in degree, which are in the less 25 by percentile. So and we randomly pick a node from this set that isn't guarded, and then we attack it. Thirdly, we have the path obfuscation. In this, we attack the nodes with strongly connected components to confuse the defenders. So inside a strongly connected component, there are path cycles around them, which makes making prediction harder for the guards. In this, we find strongly connected components, and then for each, we find a successor nodes. The nodes that are reachable from inside the strongly connected components, but they lie outside these, and obviously those which are not guarded. So we randomly attack on those successors. If no such node exists, we attack a randomly unguarded node. Then we have the bridge bypass. In this, we attack the nodes that are vulnerable due to bridge wire connection between the components. इसमें जो है we identify the weakly connected components, and we find the edges or bridges as we call them. If removed, which would disconnect the parts of the components. For each bridge node, we check if its neighbors are unguarded. उसके बाद we randomly attack the neighbor node beyond those bridges. If no such candidate exists, we fall back to our normal attacking strategy, which is attacking. All right, so that basically covers the whole project up. तो इसमें like you mentioned heuristic evaluation थी, तो that was quite an interesting way of approaching these things. क्योंकि पेपर में like काफी open ended था कि हम लोग क्या strategies करें, तो like we threw around a lot of ideas, or some of the ideas seemed ridiculous, like randomly we thought they wouldn't work, but shockingly they showed good results. ऐसे ही, और ये प्रॉब्लम इटसेल्फ बड़े मजे की थी, और सही आपके जो क्लास में हम डिस्कशन करते थे उससे जो है ना हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो ज़्यादा बेहतर हो गई थी, और दिस वाज मोर ऑफ लाइक वी ऑल वर डिस्कसिंग द वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड चीज़ें मुश्किलात भी बीच में हो रही थी, लेकिन इट वाज वेरी फन प्रॉब्लम टू सॉल्व, एंड वेरी फन टू कम अप विद इम्प्लीमेंटेशंस फॉर दिस. I think सबसे जो हमें चीज मजेदार एक्सपेक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट का हुआ था कि we got to explore the thing that were not covered in the paper. जैसे हम डायरेक्टेड ग्राफ्स पे एक्सप्लोर कर, हमने अपनी खुद की स्ट्रेटजीज न्यू डिवाइस करी फॉर बोथ डिफेंस एंड द अटैक. आई थिंक वो एक्सपेक्ट भी हमने बहुत एंजॉय करा, bring out the algorithm or उसका code and the working all. Yeah. So I think that wraps up everything for this project, right? Thank you. So that's it. Thank you, Lafis. Thank you.